शीशा अगर अच्छा होगा तो सब अच्छा। Good evening, everyone. Good evening to all, and welcome to StudyIQ YouTube session, MCQ session. आप लोगों को Sanu is there, Sikha, Sasmita, everyone is there, right? बहुत बढ़िया. एक मिनट देखें कौन ज्वाइन शेयर कर दे बाकी मान को सहित. नमस्ते शत्रु इज ऑल्सो शेयर कर दे सो दैट बाकी मैंने जॉइन कर परिबे. शेयर दिस सेशन विथ अदर्स, राइट? So let the other to join the session. स्टार्ट करिए ताले आज सेशन को. ओके चलो फिर the first question, right? Now come to the first questions. Question number 1. Good evening Subhakant, Sunita, everyone. बाकी मन को शेयर कर दे टिके जोटा सो दैट से माने जानि परिबे. चलो द फर्स्ट क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन रहबो तमरो ओशनोग्राफी ऊपर क्वेश्चन सब रहबो. द फर्स्ट क्वेश्चन द कन्वेयर बेल्ट काली में डिस्कस करथिले कन्वेयर बेल्ट. चलो फर्स्ट क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नबा में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेयर बेल्ट ऑफ सर्कुलेशन. Question number 1. So this is what thermohaline circulations in the ocean is primarily driven by what? Thermohaline, that means temperature and salinity. बस आंसर मिली जो. That means what? Temperature and salinity. And ये जो thermohaline कोठी देखा जो in thermocline zone of the ocean. ध्यान से मन रखो. This thermohaline effect or the thermohaline will be shown or that would be found in the thermocline zone. So this is your water, right? This transition zone is called as thermocline. This would be top water, or I would say SST, sea surface. That would be, this would be bottom water, and this would be the transition where it would be, right, the thermohaline zones. And answer is correct, everyone. बहुत बढ़िया आंसर देइछे समझते. जे देखिवा, it would be B, the difference in temperature and salinity. Difference in temperature and salinity. ओके ना ये टेम्परेचर सालिनिटी ऊपर किसी क्वेश्चंस मध्य डिस्कस करिवा. जदि एथरे न थाए ताले मो तरफ रु मध्य तुरंत क्वेश्चन बनै कि सालिनिटी. अच्छा मु गोटे एठी सालिनिटी रो क्वेश्चंस पचारुची तम मान को. एठी क्वेश्चन आउ किसी सालिनिटी रो में डिस्कस करिवा. मते को ऑप्शन दउची. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट salinity? Option 1 Bay of Bengal, highest salinity. Option B Arabian Sea. Option C Red Sea. Option D Gulf of Persian. हाईएस्ट salinity का पाखरे अछि. बे ऑफ बंगाल, रेड सी, गल्फ ऑफ पर्शियन का पाखरे अछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट salinity? गुड इवनिंग समीर, सस्मिता, माय लाइफस्टाइल एवरीवन. रेड सी, बहुत बढ़िया. सो व्हाट
Is a what? Yes, the right answer would be Red Sea. Okay, जदि मु तमन को पचारिबी कि पैसिफिक, लेट्स से हम कहबा पैसिफिक, Atlantic, Indian Ocean, which of the following is having highest salinity? ये तीन जनक भितरे कहार salinity अधिक? Could be Ganita. Sanu also joining me. Sunita. Yes. यदि मु कहे Pacific, Atlantic, Indian Ocean, which of from the here or from the given is having highest salinity? Yes, Sasmita is saying Atlantic, and that is the right answer is Atlantic. That is the right answer is Atlantic Ocean. So salinity of the water is controlled by what? मुझे लिखि दउची कना जेतु एटी salinity अछि एठी ही खत्म कर दबा. The salinity of the sea water is controlled by what? The salinity कौन सी जदि हम कहिबा ए जो sea water रो salinity को किए कंट्रोल करे? One would be, that means हम कहिबा latitude गोटे ही परिबो, बिल्कुल ही परिबो. ओशन करंट, ओशियानिक करंट ही परिबो, बिल्कुल ही परिबो, राइट. देन जदि हम कहिबा प्रेशर बेल्ट कहि परिबा, से भी ही परिबो. प्रेशर बेल्ट, इवापोरेशन सेटा भी ही परिबो. ओशन करंट नै गेले विंड सिस्टम, यस विंड भी ही परिबो. दैट मींस हम जदि कहिबा विंड सिस्टम सेटा भी ही परिबो. रिवर्स ही परिबो, ग्लेशियर्स ही परिबो, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ही परिबो. ये सब फैक्टर्स ओशन रो salinity को कौन करता है? टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब करता है, राइट. चले नेक्स्ट आसबा हम थाले सेकंड क्वेश्चंस को आसीबा. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ओशन करंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. 30 क्वेश्चंस अछि अजी. बाकी यार मु अलगा करंट भी कहबी. इंडियन ओशन रे कौन कौन करंट देखा जाए मु एठी ड्रॉ करती, तमे आंसर करतो. से भीतर मु इंडियन ओशन रे कोठी को प्रकार करंट देखा जाए सेटा मु कवर कर देइथिबी हला. इंडियन ओशन टा, राइट. तो इंडियन ओशन रे तुमको एठी कोन देखा जो मॉनसूनल करंट देखा जिवो. गोटे साउथ वेस्ट मॉनसूनल करंट, गोटे नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल करंट. साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल करंट देखा जिवो. काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स देखा जिवो. मोजाम्बिक करंट, एगोलास करंट. हियर इज तमरो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट देखा जिवो. सोमालियन कोल्ड करंट देखा जिवो. दीज आर द करंट ऑफ इंडियन ओशन. ताले इंडियन ओशन रे करंट कोन? एटा साउथ वेस्ट वार्म करंट, एटा नॉर्थ ईस्ट वार्म मॉनसूनल करंट. ए माने होचंदी कोन? मॉनसूनल. हियर इज कोल्ड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट. आउ गोटे तमरो एठी रहिबो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. आउ गोटे कि रहबो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. ता व्यतीत तमरो ए तो रहिबो, ये रहिबो, राइट. साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट, काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट, सोमालियन कोल्ड करंट, मोजाम्बिक करंट, एगुलस करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट. ये रहबो तुम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. दीज आर द ओशन करंट हे गेला इंडियन ओशन रो. एबे आसीबा तमरा आंसर को. तो मु सब ओशन रो कहि देबी हैला. चले आंसर देखबा तम मानकर कोन आंसर हैला. देखबा आंसर तम माने कोन कोन देइछ समस्त बी. चल देखबा कोन पचाउछि से गल्फ स्ट्रीम कोठी देखा जो वार्म्स रहिछि, एटा करेक्ट रहिछि. ओयासियो इज करेक्ट. कोल्ड हमें काना आ पूर्वरु देखिथिले कोन क्रूशियो देखिथिले. ओयासियो क्रूशियोटा कोन वार्म करंट. एटा कोठी देखा जो जापान पाखरे जोटी अछि तमर क्यूराइल आइलैंड. जोठी क्यूराइल आइलैंड अछि सेठी जापान रो ऊपर देखा जिवो. कामचाटका एसो रीजन रे देखा जो. बेंगोला कोठी देखा जिवो वेस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पाखरे देखा जिवो. बेंगोला इज कोल्ड करंट. दिस इज नॉट वार्म करंट, दिस इज व्हाट कोल्ड करंट. बेंगोला इज अ कोल्ड करंट. एगुलास होछि कोन वार्म करंट. इंडियन ओशन एबे मु देखैछि. दैट मींस 3 गॉट कैंसल, 3 गॉट कैंसल, 3 गॉट कैंसल. दिस वन इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट. तो ये तुमको मिली जिवो, राइट. इंडियन ओशन रे मु ओशन करंट कहिदली. पैसिफिक ओशन को आसीबा हमें जेतल मु पैसिफिक ओशन रे मध्य कहि देबी.
अच्छा आटलांटिक ओशन रे मु फटाफट आटलांटिक ओशन रो करंट कहि दउछि आटलांटिक ओशन रे तुमको यदि मु ड्रॉ करके आटलांटिक ओशन रो करंट देखै देबी फटाफट मु देखै देबी ताकि तुमको इजी हे जबो कना एते सारा क्वेश्चन करबा मो पय डिफिकल्ट भी कना एते सब मु कोन ओशन करंट रो 10 टा करबी कि क्वेश्चन सेमति त ही परिबनी सो आई विल ड्रॉ इट ध्यान से देखिबो फटाफट हाउ टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप केमती ड्रॉ होची सेटा भी थी मध्य तम माने सिखि जिवो how I am drawing the world map, right? Now here is Atlantic Ocean. ये तमे देखि परिबो Atlantic Ocean. How I am drawing the map. This would be fast रहबो तमरो equatorial warm current. एटा कोन रहबो equatorial warm current both south and north. एटा तमे देखा जो north equatorial south equatorial. Here would be Brazilian warm current. एटी कोन देखा जो तुमको Brazilian warm current. But एठी देखा जो कोन तुमको here would be what? That means हमें कहबा cold current west wind drift एठी देखा जो कोन west wind drift. Here would be Benguela cold current. एटा तमरो कोन रहबो Benguela cold. एटा east Brazilian warm current. Here would be Guiana warm current. एटी कोन रहबो तमरो Guiana warm current. बस एतिकी ही रहबो तमरो Guiana warm current, right? एटा रहबो Guiana warm current. Then here would be तमरो एठी तमरो Antilles अछि and आमे कहबा this would be Florida stream पाखरे आमे कहू जे Gulf stream जोटा रहबो एटा तमर कोन Antilles current भी एठी Antilles कहंती तो Antilles आउ एटा मिसी जबो दीटा मिसी गला परे तमर एठी Gulf stream हे जबो देन एठी आसला परे Irminger करा जबो देन एपोटो आसीबो तमर किए हां केस Labrador cold current this would be Labrador this would be drift this would be Irminger एठी के आसिला परे नॉर्वेजियन एठी कहबा हमें नॉर्वेजियन वार्म करंट जाको कह छै ब्लैंकेट ऑफ यूरोप देन एठी आसी जो तमरो कोन हियर वुड बी कैनरी कोल्ड करंट एठी रहइबो रोनेल आको कोन कह छै रोनेल करंट एठी मध्ये गोटे अछि फ्रांस पखरे एंड ए मझीटा रहि जबो तमरो कोन दैट वुड बी सरगासोसी दे वुड बी सरगासोसी चलो फिर ना एलिनो को आसो नेक्स्ट हम एसबे एलिनो next is Elino. So Elino देखिबा Elino southern ocean oscillations which of the following is correct? Elino is characterized by warm sea surface temperature in the central and east Pacific leads strong walker circulations intensified trade winds ये questions थारे मु करिथिली second times because of question आसीबो भी कुआडो देखो आंसर को Bartman this year is Elino or La Nina. 2025 is La Nina years. 2025 is La Nina year, not Elino year. जदि कहीं तुमको पचारे कि the 2025 is what? This is La Nina year. This is what? La Nina year. Good evening, Susri. So this one is correct. This one is so it has strong hobani Elino अच्छा it is strong अछि ठीक अछि हाँ Elino time रे weak हेते La Nina time रे कोन हेते strong हेते La Nina leads to strong water circulation. This is also correct. There are phases affect the Indian Oceans. Both all are correct. That means कुछ both Elino and La Nina phases affect the Indian monsoon. Yes, this is also correct. So all. So that means answer would be all. तो आंसर कोन हबो तमरो ऑल हिजबो ला एलिनो रे रेनफॉल कमी जबो लालिना हेले रेनफॉल बढ़ जबो दैट मींस अफेक्टिव ना सेटा नेगेटिव इंपैक्ट हे परे पॉजिटिव इंपैक्ट हे पे बट दे आर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे आर अफेक्टिंग योर monsoon so that is why all would be the correct answer all will be the correct answer next question number 4 एडा बुझा पड़ियो समस्त को ना इथर कहार डाउट अछि को जदि कहार डाउट अछि पचार दियो anybody is having doubt in this question number 3 you can ask me otherwise I will move to question number 4 which of the following facts controls the vertical distribution of the temperature in the ocean temperature of the ocean is controlled by what solar radiation latitudes and seasonal variation ocean current salinity
देखो कौन सी दैट मींस आम जदि कहबा ओशन करेंट ताले हम कहबा द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज कंट्रोल बाय व्हाट आंसर दियो 4 रो मु बाकी कहूची तो आंसर समस्ते देई साला पर 4 रो मु आंसर आउ किछि वैल्यू ऐड मध्ये एथरे करबी तो 4 रो आंसर दे देखबा सुमित्रा सुजाता शत्रु सस्मिता सुनीता सोनू everybody is going for Sikha is D. Yes, right answer is D. Apart from that, जदि हम कहिबा कि जेतलो ocean temperature, the temperature of the ocean is controlled by. Apart from that, fifth number जदि मु कहिबी wind also controls, right? Wind मध्य रहबो तो salinity, wind, glacier, melting glacier. 6 number point जदि मु कहिबी it would be what? Simple हमें कहिबा melting glaciers, cloudiness, pressure जोटा हम कहिबा so another point could be pressure जेमते high pressure low pressure cloudiness right ये सब point मध्य हेई परिबो जदि ये सब point भी रहउची melting glaciers wind cloudiness pressure सब तमरो हेई परिबो applied based question so this is what applied based questions next mid Atlantic ocean ridge कौन ridge is significance because of what The mid Atlantic ocean ridge is very important. The mid oceanic ridge जति मु ड्रॉ करके तुमको देखिबे आंसर दियो त माने आंसर देया भितर मु ड्रॉ कर देइथिबी राइट सो दैट आउ किछि हमें वैल्यू एडिशन फटाफट कर दबा द mid oceanic ridge looks like this is what आपको हमें कहू ridge this one is called as what ridge here the sea is spreading like here and the continuous volcanic eruption is taking place and the what continuous volcanic eruption is taking place so that the parallel ridges are forming what the parallel ridges are being formed and here close to the new rock will form here and the old rock will be pushed to the boundary here would be what old rock and this is fissure type of eruption एठी जो तमरो volcanic eruption होची this is fissure type of eruption and this one is basalt एटा कोन रहबो तमरो basaltic what basaltic जदि तुमको पचारिबो जो magma टा आसुची that is mafic or felsic you will say mafic this one is what mafic one this is not felsic one this one is mafic one so answer would be एबे answer मु देखिबी ताले मु तुमको वैल्यू ऐड कर दउची जो वैल्यू ऐड टा करूची ताकू तुम माने ऐड करिवो तुम नोट रे सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग यस दिस इज अ राइट आंसर इज व्हाट द राइट आंसर इज बी द राइट आंसर वुड बी व्हाट बी मु ऑलरेडी ड्रॉ करके देखैतली सी फ्लोर स्प्रेडिंग दैट मींस व्हाट दिस इज व्हाट काइंड ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग ताले मते को द सी फ्लोर स्प्रेडिंग रो कहीं की सी फ्लोर स्प्रेड बिकॉज ऑफ मु कहली थर्मल कन्वेक्शन करंट बिकॉज ऑफ व्हाट थर्मल कन्वेक्शन करंट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग होची एठी अर्थक्वेक हबो वोल्केनिक एरप्शन मध्ये रहबो बट शैलो फोकस तो मिड ओशन रीच हे जिवो अच्छा इंडियन ओशन रो लॉन्गेस्ट रीच कोन मते ताले को जेमति अटलांटिक ओशन रो एटा हम देखिले मिड ओशनिक सेमिति इंडियन ओशन रो लॉन्गेस्ट रीच रो ना किए कहबो व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट रीच ऑफ इंडियन ओशन एटा पचारिछि लेट्स से इठी तमरो ऑस्ट्रेलिया रहिला हियर इज ऑस्ट्रेलिया दिस साइड इज अफ्रीका राइट अफ्रीका इज हियर Arabian Peninsula is here. Java, Sumatra is here. Which reach is the largest? Yes, 90-degree reach. The reach name is what? 90-degree reach is the longest reach of Indian Ocean, which is separating the Indian plate and Australian plate. Which is separating the what? Indian plate and Australian plate. Here is Carlsberg Reach, here is Madagascar Reach, Seychelles Reach. So many reaches are there, but the longest one is 90-degree because our what 82 and half आमर कोन रहिछि 82 and half Indian standard time एटा कोन longitude and this is also longitude 80 जो 90 degree टा itself a longitude next questions बहुत बढ़िया 90 degree सुमित्रा भी कहिछि शत्रु एंड सस्मिता एटा मन रखिबो रीचेस कला now which of the following statements regarding the ocean salinity is are correct जो माने वैल्यू एडिशन करूची समस्त को मु कहूची जो माने साइट रे गोटे नोट रखी तो सो दैट तुम से वैल्यू टाको पुट करि परिबो
इंडिया यूरासिया को सेपरेट करूनी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करूची। माने आगुरु आमे जो प्लेट थिला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहउथले, से दीटा को सेपरेट करके गोटे इंडियन प्लेट हबो, गोटे हबो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट। नेक्स्ट which of the following statements regarding the salinity? The salinity tends to be higher in the subtropicals due to the greater evaporation. Salinity is lowest in the equator due to the heavy rainfall. The polar region generally exhibit high salinity due to the freezing of sea water. चलो फिर देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आंसर दे दिया 6 रो बी बी बी, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द बी। बहुत बढ़िया। देखे ये सब आम डिटेल्स रे पढ़ीचे, एमती ना कि किसी नुआ तुम मैंने भी पढ़ी थो, हियर एंड देयर समस्ते कोठी ना कोठी पढ़ी थो। ताले सालिनिटी पई जदी हम देखबा हियर तो जोडी हम पोलार रीजन रे कोन हबो, पोलार रीजन रे बिकॉज ऑफ द पोलार रीजन एज द व्हाट, देन एटा से कहूची ये को सालिनिटी कथा कहूची, ये कहूची सरफेस सालिनिटी कथा। हमें कहा कथा कहूचे सरफेस सालिनिटी कथा कहूचे। एटा हमें कहा कथा ए जो डिस्कस करूचे ना ओशन सालिनिटी, व्हेन आई से ओशन सालिनिटी दैट इज बाय डिफॉल्ट सरफेस रो कथा कहूचे। जदी मु कहितंती वर्टिकल ताले एटा करेक्ट हे थांता, ताले एटा ए सेंटेंस टा करेक्ट हे थांता। ध्यान से मन रखियो, otherwise this two is correct, this one is wrong because of melting glacier there would be more fresh water, there would be more fresh water, no salinity, this is wrong and that is why B is the correct answer। जदी मु कहितंती वर्टिकल salinity ताले एटा करेक्ट हे थांता। थर्ड ऑप्शन मु कहि दउची, से कहछि पोलार रीजन जनरली ना, पोलार रीजन जनरली फ्रेश वाटर, हाई सैलिनिटी नो, जनरली फ्रेश वाटर। सो पोलार रीजन जनरली फ्रेश वाटर, नॉट saline वाटर, जनरली फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू से कहछि फ्रीजिंग ऑफ सी ना। किंतु जदि मु तुमको एटा कहछि भाबो एटा हला पोलार वाटर, एटा पोलार वाटर, एटा सरफेस, ए सरफेस रे ग्लेशियर सब फ्लोट करूची, ग्लेशियर्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। किंतु पोलार रीजन रे ए तळे सालिनिटी अधिक, तळे सालिनिटी अधिक, ऊपर सालिनिटी कम, ऊपर सालिनिटी कम, सेतपे बरफटा भासुची कारण तार डेंसिटी कम। ए तळे कोन हाई सालिनिटी, बरफ तळे पानीटा थाई कि लिक्विड थाए, कारण सालिनिटी थिले टेम्परेचर अधिक थबो, दैट इज व्हाई इट इज फ्लोटिंग। सो बॉटम रे तुमको सालिनिटी अधिक देखा जिवो, बट सरफेस वाटर विल बी फ्रेश वाटर। इज इट फाइन टू ऑल? बुझी परियो पोलार रे सरफेस माने जेमिति तमे भाबो आमे बरफटा भासुची काहेकि तळे सालिनिटी अधिक अछि बोली, बिकॉज ऑफ द सालिनिटी डेंसिटी विल बी मोर द सालिनिटी मोर द डेंसिटी, मोर द सालिनिटी मोर द टेम्परेचर एज वेल, दैट इज व्हाई बिलो द ग्लेशियर दैट वुड बी लिक्विड। नेक्स्ट अपवेलिंग जोन, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कांसेप्ट मु कहि दउची। Question number 7, upwelling zone in the ocean is ecologically upwelling कोठी हुए, upwelling because of offshore wind, upwelling काहे की हुए साधारणतः ध्यान से मन रखो एक कथा कि जेमती तमरो लालिना टाइम रे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लालिना जदि तमे जेमती कि ये लेट्स से हम कहबे साउथ अमेरिका, जेतरो लालिना टाइम हुए एठी कोन हुए upwelling happens, upwelling happens काहे की because of offshore wind, because of what, because of your offshore wind, due to the offshore winds, that is why the upwelling happens, that will brings the nutrients rich fresh waters deeper to the surface. Yes, this would be there. Transport the dissolved oxygen from the surface to the deeper, but no, this is a wrong erroneous statements kana तळु वाटर टा ऊपर को आसीबो, अपवेलिंग, अपवेलिंग अर्थात कोन तळु वाटर टा ऊपर को आसुची जेम, राइट, cause sinking of saline waters in the high latitudes, ए साधारणतः हाई लैटिट्यूड रे देखा जाय नि, लो लैटिट्यूड रे देखा जाय। चल आंसर देखिबा किए कोन दउ आंसर, मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन्स आस्ते,
leads to the coral bleaching and the marine desertification. No, this is not wrong. This is not, ये सिंक हबनी, एटी सिंक हबनी, एटी बा अपवेल होची, अपवेल होची तो सिंकिंग केमती हबो, से कोच बुझे मिड लैटिट्यूड रे साधारणतः अपवेलिंग हुए नहीं, ये साधारणतः ट्रॉपिकल से देखा जाए। ओके, चलो फिर 7 नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। हाँ, नेक्स्ट आसबा 8 नंबर, ওইটা आंसर কি হচ্ছে না, यस Sargasso Sea, surrounded by the ocean current rather than land. Dead Sea is the highest salinity amongst all the major water bodies, and Red Sea known as the high biodiversity of the corals. Aral Sea shrinking due to the biodiversity of the river. हाँ 8 नंबर देखो, यस ट्राई करो। 8 नंबर ए कौच शत्रु, शिखा कौच ए, शुभकांत ए, ऑल समस्त कौन राइट। ओके देखा देख सर्गासो सी कौन ही थे, सर्गासो सी समस्ते जानते सर्गासो सी व्हाट हैपेंस कि सर्गासो सी कौन जेतला हम कहूचे सर्गासो सी दैट मीन सी विद इन सी, आकु मध्ये आउ कोन कहा जाय, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सी विद इन सी, आकु भी कहा जाय बॉर्डरलेस सी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सी विद इन सी और बॉर्डरलेस सी और बॉर्डरलेस सी। अटलांटिक ओशन रे देखा जाए डेड सी रे जानते सालिनिटी लगभग 400 राइट। रेड सी एंड दिस इज आरएल सी, देखो आरएल सी एठी लिखा है श्रिंकिंग ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, ये गलत, ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत ना, आरएल सी इज श्रिंकिंग ड्यू टू द बायोडाइवर्सिटी ना, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, दिस एक्चुअली कौन होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ वाटर, ड्यू टू diversion of water from Amudaraya and Sirdaraya जो रिवर अच्छी आरएल सी को दीटा रिवर आसुचे, गोटे आमुदाराया गोटे सिरदाराया, ए दीटा रिवर वाटर को कौन कर डाइवर्सिफाई कर कॉटन कल्टिवेशन ये सब लगे सो तो वाटर रिवर जिते आम महानदी जी वाटर टाक डाइवर्ट करदे ताले आम कह अंशुपा लेक कौन हो खत्म हो, ये भी सेमती ये जो आरएल सी अच्छी तार वाटर टाक डाइवर्स करुँच एंड क्लाइमेट चेंज जो हो नॉट बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ही भूल अच्छी, छाड़ दिया तक। नेक्स्ट बहुत बढ़िया आंसर देते समझते। नेक्स्ट द टाइड्स इन द ओशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? द स्प्रिंग टाइड्स occurs when the sun moons are in straight lines or aligned. The neap tides when they would be in the quadrature or relatively आमे कहबा राइट एंगल्स रहिबो। तो मु आकु ड्रॉ कर दोची फटाफट, तो माने से भीतर आंसर दियो, तो मैं आंसर दे भीतर मु आकु ड्रॉ कर दोची सो दैट जानि परिबो। लेट्स से हियर इज अर्थ, एठी अर्थ मून सन, ये गोटे स्ट्रेट लाइन हो पारे, अर्थ मून सन, दिस इज क्वाड्रेचर, दिस इज ए एंगल को कौन कह जाए क्वाड्रेचर। यदि अर्थ एठी रहला, मून एठी रहला, सन एठी रहला, ये जो 90 डिग्री फॉर्मेशन करूची आकु कह जाए क्वाड्रेचर, जोटा एटा यारो एटा। देन से कहूची टाइडल एम्प्लीट्यूड्स इज इन्फ्लुएंस बाय द कोस्टल मॉर्फोलॉजी, जेमति कि तमर गुजरात फॉर एग्जांपल गुजरात, वेस्ट बंगाल्स, बे ऑफ फॉन्डी। चलो अगला आंसर मिलला,
आंसर डी कहूची बी कहूची किए सुजाता कहूची बी शत्रु कहूची डी सस्मिता कहूची ए माय लाइफस्टाइल ए डी डी आंसर वुड बी डी आंसर वुड बी व्हाट डी हबो ना आंसर कौन हबो आंसर वुड बी डी आंसर डी अरे मु तुम को कही जदि तुम मैंने न बुझी पार अप्लाइड कर दिस आर व्हाट दिस इज क्वाड्रेचर नीप टाइड क्वाड्रेचर एटा ठीक अच्छी एटा बेसिक जिनस पढ़ा कथा एटा ठीक अच्छी एंड देख ये जो तुम कोस्टाल मॉर्फोलॉजी ना से आमर देखियो सुंदरबन पाखे टाइड अधिक आसे गुजरात पाखे कहीं टाइड अधिक आसे जदि तुम मानकू यही पॉइंट क्या जना पड़ूनी थर्ड नंबर पॉइंट मुझे देखिए दूसरी थर्ड नंबर पॉइंट अच्छा देख गुजरात पाखे तुम जान आमर अच्छी कौन ये आम देखा ये अच्छी किए कांडला पोर्ट हियर इज योर कांडला पोर्ट जहाँ आम दीनदयाल पोर्ट कहूचे ये आपको कौन कहते दिस इज द टाइडल पोर्ट दिस इज टाइडल पोर्ट कि नहीं कांडला जोटा आम एबे कौन दीनदयाल पोर्ट ये जो दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट तो ये टाइड कहीं अधिक आसूची व्हाई कारण यहाँ नारोटा गल्फटा तेणु जोठी जोठी तुम गल्फ रही अधिक टाइड हम तेणु कोस्टल मॉर्फोलॉजी इन्फ्लुएंस द टाइडल करेक्ट चलो फिर बुझीपार ये कर चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल्स एटा काली ना परदिन कही बा इंडियन ओशन डाइपोल्स बोधे डिस्कस करथिली इंडियन ओशन डाइपोल्स आज ये कहबिनी कह Indian ocean dipole. A positive Indian ocean dipole is associated with the warm waters near the African coast and the cool water in Indonesia. Positive Indian ocean dipole generally enhance the Indian monsoon. The Indian ocean dipole depends on the El Nino and has no relations with it. Kali discuss करथिले आंसर समस्त को जाना अछि. Everybody knows this one. But फिर भी कुआ मते. फिर भी कुआ. Repeat है जो कुआ. This is what question number 10. 20 more questions are there. Sanu Prasad A, Subhakant A, Susri A, Sasmita A, Shikha A, Sujata 1 and 2, Satru A, my lifestyles depends on you know yes. Select a complete no relation no is having relation तेणु तीन टा भूल हो तीन टा भूल हेले तमरो कोन हबो 1 and 2 is the answer. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हेले रेनफॉल अधिक हबो नेगेटिव हेले रेनफॉल कमिबो मु आर इक्वेशन कर दोछि आर गोटे इक्वेशन अछि इक्वेशन कोन ध्यान से सुनिबो एटा इक्वेशन टा जदी तमरो इफ भाबो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस लालिना इक्वा इंडिया रे कोन हबो ताले एला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस लालिना इंडिया रे कोन हबो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस एलिनो कोन हबो देन इक्वेशन 4 नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस एलिनो कौन हम दिज आर द इक्वेशन ये चार्टा इक्वेशन मन रखियो समस्ते राइट ये चार्टा इक्वेशन समस्ते मन रखियो ताले जदि तमरो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अछि लालिना अछि एक्सेस रेनफॉल एटी कोन हिजबो इंडिया रे इंडिया विल रिसीव एक्सेस रेनफॉल देयर वुड बी एक्सेस रेनफॉल राइट तो एटा कोन हिजबो तमरो एक्सेस रेनफॉल हिजबो आउ जदि एटा रहिला दैट वुड बी दैट मींस नेगेटिव अछि सो इट वुड बी नॉर्मल it would be normal बा एवरेज ये पॉजिटिव अछि ये नेगेटिव अछि नॉर्मल अगेन it would be normal और एवरेज ये नेगेटिव it would also ताले ड्रॉट ताले कोन हबो ड्रॉट हिजबो इंडिया रे DROUGST हैला इंडिया रे कोन हिजबो ड्रॉट कंडीशन देखा जिवो एठी तुमको एक्सेस हबो एटा नॉर्मल एटा ड्रॉट बाटा डेफिसिट रेनफॉल एटा सरप्लस एटा कोन हिजबो सरप्लस दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर ये इक्वेशन मन रखियो हैला चलो फिर नेक्स्ट
sound fixings and ranging in the ocean is significant because of what? So far, sound fixings and ranging is for what? चलो फिर यही पर 11 वाला ट्राई कर हाई जो टिके दिमाग लगा हो सस्मिता कौच ए सुजाता कौच ए शुभकांत ऑल्सो ए इट इज ए जोन ऑफ मैक्सिमम सैलिनिटी देखो या सहित सैलिनिटी सहित किसी रिलेशन अछि कि नहीं एटा एसोसिएटेड विथ इक्वेटोरियल अपवेलिंग बिल्कुल ये स्टेटमेंट देखो किसी नबदमा ही नहीं जदि तुमको काहाकू भी आसुनी ना लागुच यार एटा तो मु सुनिनी बट तमे तो एटलीस्ट ट्राई तो करि परिबो इक्वल के इट डज नॉट हैव एनी रिलेशंस विथ दिस डज नॉट हैव रिलेशन विथ दिस okay thermohaline so this would be the answer चले then 12 कितने नंबर 12 ना हाँ एकमैन स्पाइरल कौन हाँ तुमको लगे कि एकमैन स्पाइरल्स तुमको लगे कि एटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट इट्स ए साधारणतः पढ़ा जाए नहीं बट ऑप्शनल रे जियोग्राफी ऑप्शनल रे पढ़ा जाए एकमैन स्पाइरल्स कौन मु कहि दिए भाव विंड रा डायरेक्शन एमती अछि विंड रा डायरेक्शन एटा भाव गोटे लार्ज वाटर बॉडी जस्ट बिलीव दिस इज वाटर बॉडी ये गोटे वाटर बॉडी just imagine this one is a large water body or Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific, whichever you can imagine, right? Now the wind is blowing like this. This is the direction of wind. And Coriolis force तमे जानिछ northern hemisphere right को deflect करिवो, it will deflect towards the right. And what would be the relation between the X-man water transport is that it would be perpendicular to the wind direction. It would be perpendicular to the wind direction. Simple कहे को गले एकमैन स्पाइरल कौन हुए समुद्र रे वाटर टा जो अच्छी भाव एटा तुमरो अटलांटिक ओशन इफ दिस वुड बी अटलांटिक ओशन जदि आमे कहिबा एटा अटलांटिक ओशन राइट एटी अछि भाव एटा अटलांटिक ओशन तो आमे ओशन करंट एमती रोटेट करूची रोटेट करी करी तळकू जाउची सेतपे गोटे स्पाइरल होची तळकू जाउची तेणु ये जेते तळकू जाउची विंड टा सरफेस रे एमती ब्लो करूची विंड जेते एमती ब्लो करूची तो वाटर टा डिस्चार्ज हो केमती तो वाटर विल डिस्चार्ज परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल रे हबो तेणु दिस वुड बी द बी इज द करेक्ट आंसर yes B is the correct answer so that is why B is the correct so that means आमे कहबा deflection ताले wind driven surface current with depth ध्यान से मानको जदी एटर गोटे सिंपल मानको कि माने wind कोन करूची वाटर टाकू नै कि जाउची बट वाटर डिफ्लेक्शन हबो सेटा परपेंडिकुलर सबले रहिबो मार्जिनल सी देखो काली आमे मार्जिनल सी देखिथिले कहारो इंडियन ओशन रो आज आमे देखुजे कहारो ए देखो ए मान के भितरे किए मार्जिनल सी रे आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीज आइडेंटिफाई classified as marginal sea देखो आंसर मु काली कहितली 13 आंसर काली मु कहितली मु काली आंसर कहिची यार काली इंडियन ओशन कहला बेले कहितली मु के बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर नॉट मार्जिनल सी काली कहितली काली कहि नथिले कथा मन पकाओ
मु काली कही कि नहीं कि बे ऑफ बेंगल एंड अरेबियन सी आर नॉट मार्जिनल सी। काली मु किए मार्जिनल सी कथा कही इंडियन ओशन रो। इंडियन ओशन रे मार्जिनल सी रहिबो तमरो। जदि मु इंडियन ओशन रो पचारिबी, इंडियन ओशन रे रहिबो रेड सी रहिबो, गल्फ ऑफ पर्शियन रहिबो, गल्फ ऑफ एडेन रहिबो, तमरो अंडमान रहिबो, राइट, मोजाम्बिक रहिबो, एमाने रहिबो, बट नॉट बे ऑफ बेंगल एंड अरेबियन सी। So they are not. Then okhot's will be there. This will be there. So answer would be B. The answer कौन रहिबो B. काली एक कथा कुआ हेतला कि नहीं कुआ हेतला ना। So that marginal C अर्थात कौन। अच्छा तमे आगे marginal C रो मीनिंग बुझो। से बुझी पारुना बोली मीनिंग से भूल होउची। marginal C कौन। अच्छा आगे मु ड्रॉ करे। एठी रहला इंडिया, here is Arabian Peninsula, here is Africa, राइट। ये छाड़ तो मु पूरा आफ्रिका ड्रॉ करूनी। एठी माडागास्कर रहिला, हियर इज योर ऑस्ट्रेलिया, जाभा, सुमात्रा, ये एमती रहिला। ठीक अछि, राइट, करेक्ट। ताले मते कहो एठी गोटे छोटो वाटर बॉडी, ये छोटो वाटर बॉडी, ये गोटे वाटर बॉडी, ये गोटे वाटर बॉडी, एटा गोटे एटा। ताले आमे कहिबा ए माने हैला मार्जिनल। तो बड़टा केमती मार्जिनल हबो, मार्जिन रे की अछि। हाँ जदि मु कहितांती गल्फ ऑफ कच्छ ताले हबो आंसर। तमे जदि कहो गल्फ ऑफ कच्छ सर हबो, मु कहबो हां हां आंसर। तमे कहबो सर एठी पाल्क बे अछि, देखो ध्यान से। तमे कहबो सर एठी पाल्क बे अछि, एटा हबो, मु कहबो हां एटा भी हबो। एटा मार्जिनल्स बट ए पाल्क बे हबो नाही, एटा हे जिवो कने एटा मार्जिन रे बे अछि। पाल्क बे एटा मार्जिनल हेबो, बट अरेबियन टा एते ये ऑलरेडी मेजर पार्ट, ये मेजर पार्ट सेति में हबो नै। बे ऑफ बंगाल इज मेजर पार्ट, दैट इज व्हाई इट वुड नॉट बी। तेणु ये हबो, ये हबो, ये हबो, अंडमान सी हबो। एठी टाइमुर सी अछि, एठी तमरो कोन अछि टाइमुर सी, तो एटा हे जिवो। बट ये बेब ये हबोनी कि ये हबोनी, दिस आर राइट डन। सेमती तुमको नवा पड़िबो एबे। चलो फिर, which of the following is the largest ocean current? बहुत सारा कॉन्सेप्ट मध्ये क्लियर करई दउची। which of the following is the largest ocean current? largest कहिची in terms of volume of water transport करे। largest सबले वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट हला लेंथ। हाँ फटाफट 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 करो। Atlantic circumpolar current। Atlantic circumpolar केमती हबो? Atlantic circumpolar। अच्छा सी कही देलो किए शत्रु। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल गल्फ करंट अच्छी, क्रोशियो अच्छी। अच्छा आउ तो किसी नाही ना, ओहो सती पे कहलो कि सी। ओके ठीक अछि देखिबा। हाँ ठीक अछि, बाकी वन ट्राई करो। मु जदि एठी आउ गोटे ऑप्शन देई देबी, इफ आई गिव्स अनदर ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम्स। तो गल्फ स्ट्रीम जदि मु कर देबी ताले एटा आंसर हे जिवो। अदरवाइज दिस इज द राइट आंसर। यस दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काल्कारियस ऊज कौन?
ऊज अर्थात ऊज आर मड टाइप रो ये ओशन रो बॉटम रे देखा जाए ऊज सब मन रख ऊज कौन ऊज आर बेसिकली ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है दे आर फॉर्म्स ऑर्गेनिक दे आर ऑर्गेनिक एंड बॉटम रे देखा जाए ओशन रो बॉटम रे देखा जाए को नेक्स्ट ट्राई करो वो गल्फ स्ट्रीम अच्छी कि फिर भी हबनी देखिए वॉल्यूम रे कौन ये फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप पचाऊ तो एक मिनट रो आर मु आंसर टा एक्सप्लेन करूचे एक मिनट हाँ यहाँ गल्फ स्ट्रीम हेनी मु भूल कहीदे कहीं देख कहीं ये ना दीटा करेन्ट मीट करुच्ची यहाँ गोटे करेन्ट आसला ये गला ये अच्छी तुम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये किए अच्छी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अच्छी प्लस आउ गोटे आमर ये कौन रही तुम ये जो करेन्ट आसूम ईस्ट ब्राजिलियन करेन्ट ये भी आसो ये भी मीट कर द्वारा कौन हो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये बढ़ी जाऊँ ईस्ट ब्राजिलियन वार्म करेन्ट वाटर दौर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वाटर दौर तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कौन हो बढ़ी जाऊँ प्लस ये आउ गोटे ओशन करेन्ट अच्छी छोटियाटा मन पड़ूनी यहाँ कौन से जो आम मैगलेन स्ट्रेट अच्छी ये आउ गोटे छोट करेन्ट गोटे अच्छी तो ये जो दी तीन टा करेन्ट ये मिसवा द्वारा कि वॉल्यूम टा बढ़ी जाऊँ चलो नेक्स्ट काल्कारियस ऊज जदि ये क्या देख ऊज जदि क्या जना पड़ूनी कि काल्कारियस ऊज कौन मुझे टेक्निक कही केमती कर जो ये क्वेश्चन देख जो लार्जेस्ट थी सब लॉन्ग स्टेटमेंट थी मॉडरेट टोन थी आंसर इज हियर ताले ऊज कौन ऊज आर द सिंपल लिक्विड मोड ए माने कौन लिक्विड मोड ऊज आर व्हाट ऊज आर बेसिकली जदि मु कहबी ए माने होचंती लिक्विड मोड कोठी देखा जाए सी फ्लोर रे किंतु सी फ्लोर रो बहुत डेप्थ रे देखा जाए ए माने केमती ही थाए जेते तमरो एलजी फेलजी मरी गला परे राइट से मानकर जो ये रे तो ऑर्गेनिक हेता बेसिकली एटा हमरो जदि हम कहबो ऑर्गेनिक हेता एंड दैट इज व्हाई आंसर वुड बी दिस वन नेक्स्ट 16 number which of the following currently Kelvin waves in ocean Kelvin waves in ocean ट्राई करो हाँ फॉल्कलैंड कोल्ड करंट थैंक यू फॉल्कलैंड कोल्ड करंट मु भूली जाइथिल सेटा ना फॉल्कलैंड कोल्ड करंट नेक्स्ट केल्विन वेव्स यस नेक्स्ट ट्राई करो ये जान किसी ना
अरे एटा ट्राई तो करिवो जानि न जदि ट्राई तो करिवो मु कहितली सेंटेंस टा लंबा चौड़ा हेथिबो तो एटा दे आर द ग्रेविटी वेव्स ट्रैप्स अलोंग द कोस्ट एंड इक्वेटर ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स सिंपल केल्विन वेव्स आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिनो लालिना फॉर्मेशन रे हेल्प करता है दे आर द ग्रेविटी वेव्स ट्रैप्ड अलोंग द कोस्ट ए माने कोन ग्रेविटी वेव्स ट्रैप्ड अलोंग द कोस्ट एंड इक्वेटर ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट जो ए माने ट्रैप है कि थाए ये साधारणतः दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिनो एंड लालिना ओके हार्डलेस सेल एटा तो जानी को एटा को आराम से कहबो एटा समझते आवाज स्लेव है ना यस 17 ट्राई करे 17 हे जो देखो इजी अछि समस्त करि परिबो आराम से आंसर कोन हला आंसर देखिया कोन अछि इजी क्वेश्चन थिला डी समस्त कोन डी दैछो कोन आंसर देखिबा हार्डलेस सेल yes done all is the correct answer yes all is correct answer next consider the following statement Sovaline current eta already mu discuss कर दैछि सब कहि दैछि बस कुओ तो माने आंसर कहबो consider the following statement तो एटा कहा कि कोल्ड करंट ऑलरेडी डिस्कस कर दैछु हमें दी तीन दिन हला डिस्कस करछि मु सेम जिंस नाही कि हे जो ट्राई करो आंसर देखिबा आंसर को बी 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 चलछि आंसर आंसर बी क्रोशिया इज वार्म करंट so crochet is what crochet is सोमालिया बा कोल्ड करंट कैनरी बा कोल्ड करंट लैबोरेटरी बा कोल्ड करंट हां तो बी केमथि हबो सोमालियन कोल्ड करंट कोइ नथिली के सोमालियन इज ए कोल्ड करंट इंडियन ओशन रे कोइ नथिली मु जेतले इंडियन ओशन रे कहितली के सोमालिया इज ए कोल्ड करंट ना कोइ नै कथा हां कोइ नै ए कोन कहउछ कोन आंसर वार्म केमथि हबो
आंसर देख अब डाउट क्लियर एवं डाउट क्लियर सोमालियन करेंट कोल्ड होता है समर रे वार्म होता है विंटर रे ना डाउट क्लियर बिकॉज कहीं की कोल्ड हुए ड्यू टू अपवेलिंग ड्यू टू व्हाट अपवेलिंग ड्यू टू अपवेलिंग ये कोल्ड हुए स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग तापई कौन दरकार स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग ड्यू टू मॉनसूनल विंड ड्यू टू मॉनसूनल विंड चले चलो सर नेक्स्ट सेशन को लाइक करिवो कमेंट करिवो हला शेयर करो चलो फिर नेक्स्ट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज लोकेटेड इन वेयर ये तो समझते जानछो इजी क्वेश्चन देखो 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 राइट राइट इजी क्वेश्चन मारियाना ट्रेंच कोठी अछि मारियाना ट्रेंच वेस्ट पैसिफिक साउथ वेस्ट पैसिफिक मारियाना ट्रेंच कोठी अछि साउथ वेस्ट पैसिफिक कोठी अछि साउथ वेस्ट पैसिफिक ईस्ट ऑफ फिलीपीन ईस्ट ऑफ फिलीपीन ईस्ट ऑफ व्हाट फिलीपींस आ तार डीपेस्ट पॉइंट किए चैलेंजर डीप चैलेंजर डीप नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया आंसर समझते देइछो राइट 20 नंबर क्वेश्चंस which of the following is the characteristics of western boundary current western boundary current they are broader weaker than the eastern boundary current they transport warm water poleward they are associated with upwelling zones they flow equatorward ट्राई करो बढ़िया क्वेश्चन अच्छी दिमाग लगाया पड़ो टिके टिके दिमाग लगेले जना पड़ जीवो माने कौन कहले छोट छोट क्वेश्चन किंतु डिफिकल्ट लागिवो let's say this one is your equator here is South America so warm water is coming piling off move so here would be what warm water will be moved towards pole like this so answer would be this one B is the correct one upwelling haboni upwelling 80 habo upwelling will be here will be upwelling here would be deposition and this warm water will move towards the pole both end Atlantic Ocean रे भी सेम हबो Indian Ocean रे भी सेम हबो and Pacific Ocean रे भी सेम हबो B is the correct C हबो नाही upwelling काहे की हबो एठी बे डिपोजिशन होची upwelling काहे की हबो no upwelling अपवेलिंग कोठी हबो जोठी ऑफशोर हुए ध्यान से देखो यदि को मानकर डाउट लगुची अपवेलिंग हबो काहे की अपवेलिंग हबो मो कथा ध्यान से देखो लेट्स से दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया कोस्ट ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द विंड ट्रेड विंड इज कमिंग लाइक दिस एटा कोन ऑनशोर होउची ना दिस इज व्हाट ऑनशोर अपवेलिंग पई कोन दरकार ऑफशोर बट हियर दिस इज ऑफशोर एठी कोन दूर को जाउची हियर वुड बी अपवेलिंग 21 consider the following ocean current and characteristics feature try it
ट्राई करो हम्बोल्ट करंट देछि आगुलास देछि लैबोरेटरी दिछि वयासीओ दिछि बस मैच करिया पड़े तुम मन को ऑलरेडी हमें मैच करी बहुत गुड़ा दिस टाइम यू हैव टू आल्सो डू द मैच 21 आगुलास कौन वार्म करंट कही मु Agulhas Atlantic Ocean as the eddies deflects into Atlantic Ocean as eddies. Humboldt is a what? Cold current in South Pacific Ocean. South Pacific लिखा है ना Humboldt. Okay. South Pacific कही हाँ देखा आंसर करो वैसो कोल्ड करंट ठीक अच्छी लैब्राडोर वार्म करंट गलत एटा कोल्ड करंट तो आंसर कौन मिलला तुमको 3 को माइनस कर दे ए सी कौन किए देलानी सी सी कहीं क्या हबो सी भी हबो की ये हबो ना सी कहीं क्या हबो ए इज द करेक्ट आंसर ये इज द करेक्ट आंसर कौन ये इज द करेक्ट आंसर राइट तो तुमको सिंपल भाबियार अच्छी एते कहीं बेसी कॉम्प्लिकेट कहीं भावुच हाँ हम्बोल्ट ये तो एठी अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी दैट मींस ए करेक्ट टू आगुलास आगुलास ठीक अच्छे एटा तुमको काहाकू डाउट एठी लागुथबो बस एठी डाउट थिबो ठीक अच्छे ये तो नुह कैंसल हो गला 3 गॉट कैंसल 3 गॉट कैंसल तले ए दीटा रहउछि हां के नहीं तले ए तो तमरो वयासियो करेक्ट अछि ए जो एडी फॉर्मेशन एथि पे एडी फॉर्मेशन करिवो जस्ट अ मिनट अफ्रीका मैप टा ड्रॉ करिबा एगुलास वार्म करंट इज कमिंग लाइक दिस सो दैट एठी एठी तमरो कोन अछि बेंगुइला कोल्ड करंट तो एठी गोटे एडी फॉर्मेशन करिवो राइट एडी फॉर्मेशन करो एटा मन रखिबो नेक्स्ट इंडियन ओशन रु से एडी फॉर्मेशन करे पे अटलांटिक को जाउछे ना 22 ए भी डिफिकल्ट अछि ट्राई करो 22 सुजाता तरह अप्लाई कर देलानी ना दिस इज व्हाट डायटम एंड डायनोफ्लागियास तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होची 1 एंड 2 तो ये साधारणतः प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन माराइन इकोसिस्टम जदि हम कहिबा हु आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो ये तुम्हारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है दिस टू विल कम्स ता व्यतीत तुम्हारा सियानोबैक्टीरिया ताकू मध्य तुम नहीं परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक इट सियानोबैक्टीरिया ताकू मध्य तुम नहीं परिबो राइट इट वुड बी ए सो अपार्ट फ्रॉम दैट सियानोबैक्टीरिया को भी नबो तुम ब्लू ग्रीन एल्जी जहाँ को हमें कहूचे राइट तो सेटा को भी नहीं परिबो तुम सो दैट इज द एटा इंपोर्टेंट है
नेक्स्ट जी बताले which of the following is the best description of Coriolis effect on ocean? Coriolis effect on ocean. Best description of Coriolis effect on ocean. (23) Which of the among following? Easy question, easy ହେଇଯିବ शुभकांत शिखा सस्मिता शत्रु सुमित्रा सुश्री संगीता नायक सनु प्रसाद yes चलो A is the correct answer. Yes, Mona Lisa also coming. Yes, A is the correct answer. तो Coriolis force रा काम कोन डिफ्लेक्शन करेबा हां कि नहीं Coriolis force तमन को तो बारंबार कहिछि मु Coriolis force deflection of the wind and the current due to the earth rotation ये कथा बारंबार मु कहिछि सबले Coriolis force wind हो कि बा ओशन करंट को राइट हैंड को डिफ्लेक्ट करे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड को डिफ्लेक्ट करे साउदर्न हेमिस्फीयर ये कथा डिस्कस हमें करिछे ना करी नै हां बहुत थर कहिछे ना ताले एटा करो 24 नेक्स्ट 24 24 D कौन है लाइट कौन कहूँ एलिना एसोसिएटेड विथ व्हाट weakening of the trade wind pacific ocean collapse of the faces of the coast of Europe yes D is the correct answer ठीक अछि this one is correct all is the answer बहुत बढ़िया एटा बुझी पारछ समझते ना बुझी पारनो सनु शिखा सुनीता शुभकांत सुश्री समस्त दउछंती आंसर एटा डी हबा एटा किछि बुझा पड़लानी काहाकू काहे की देख एलिनो अर्थात कोन जदि न बुझा पड़ुछि मु कहूछि जदि न बुझा पड़ुछि मु बुझेई दउछि टिके फटाफट हैला ना ये बुझाया पे टिके टाइम लागे तो सेतवे मु नले बुझेबारे किछि असुविधा नै एलिनो मीन्स व्हाट वार्म वाटर एठी देखा जिवो केते बेले देखा जिवो जेते बेले तमरो वार्म वाटर आगे कोठी थिला ईस्टर्न एठी हम केबा बा ऑस्ट्रेलिया पाखरे थिला एठू रिटर्न करबो केते बेले जेते बेले तमरो ट्रेड विंड वीक हबो ट्रेड विंड वीक हेले सना मु गोटे जिंस को पेली की रखी मु वीक हेले ए रिटर्न करिवो एंड दैट इज व्हाई आंसर वुड बी इट विल बी व्हाट रिटर्न करिवो दरकार से है ना रिटर्न करिया दरकार कोलैप्स काना जेते बेले वार्म वाटर आसी जे सेठी कोन फिश सब मरी जिवो जो पेरू चिले कोस्ट रे सेटा माछ सब मरी जाए लालिना टाइम रे माछ गुडा बेसी अधिक हुए बस एलिनो रो ऑपोजिट एटा माराइन स्नो रेफर्स टू व्हाट केते बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज दिया हिची देखो देखो गोटे गोटे डिस्कस कले टाइम लागि जिवो हां ट्राई करो माराइन स्नो
जितेश कौची सर मैथ अच्छी कि ओएस एग्जाम रे हाँ सी सैट अच्छी ना मैथ अच्छी तुम पेपर 2 रे अच्छी प्रिलिम्स रे अच्छी मेंस रे नहीं प्रिलिम्स रे इन व्हाट इन द प्रिलिम्स एग्जाम रे तुमको देखा जो yes the answer is the correct answer is what continuous store of the organic material falling from the upper layer of the ocean this is very important marine snow अच्छी पेपर 2 रे अच्छी राइट तो माराइन स्नो कले बुझी परिबो एबे दैट मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहबा द डेड पार्टिकल्स साधारणतः तमरो आसबो कोन ऑर्गेनिक्स जेते सब डिपॉजिट हवा सेकंड लेयर रे राइट ये मन रखि परिबो ओके चलो द नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्मेशन ऑफ द डीप वाटर masses which of the following process lead to the formation of deep water masses को आंसर 25 नंबर एक होची सुनीता सस्मी सुश्री कहते बी शिखा कहूँ बी शत्रु कहूँ ए which of the following lead to the से कहूँ deep water देख deep water अर्थात कौन यदि if evaporation exceeds the precipitation what will happens deep water means sinking water ताले आपको कौन कहबा में सिंपल कहबा sinking water ताको हमें कौन कहबा जो वाटर टा सिंक करिवो लेट्स से एटा रहला तमरो ओशन एठी वाटर टा एठू सिंक कले डीप को जीवो ताले जदि evaporation exceed the precipitation that means salinity will increase ताले एठी कोन हो salinity बढ़िवो आ जे salinity अधिक हो डेंसिटी बढ़िले कोन हो जीवो सिंक हे जीवो वाटर ठंडा हेले भी सिंक करिवो वाटर टा जदि कोल्ड रहिबो सिंक करिवो salinity अधिक हेले सिंक करिवो बस बट रिवर डिस्चार्ज कले हबो नहीं दैट इज व्हाई आंसर मिली गेला the answer would be 1 2 3 27 मॉनसूनल करंट मु आउट के पूर्व कही मॉनसूनल करंट मु स्टार्टिंग रे आज कही देख नुआ नुआ कॉन्सेप्ट केते बाहर देखुच कि नहीं हाँ नुआ नुआ कॉन्सेप्ट मिलूँ ना बिल्कुल मिलूँ जमती तमें देख यहाँ गोटे आम नुआ कॉन्सेप्ट देखिले जोटा कि आम ए डीप वाटर कॉन्सेप्ट देखिले माराइन स्नो कथा देखिले आम राइट तो नुआ नुआ कॉन्सेप्ट भी बहुत गुड़ा आसूची केल्विन कथा भी आम देखीचे केल्विन 27 मॉनसूनल करंट दे रिवर्स डायरेक्शन सीजनल एटा ऑलरेडी आम पढ़ीचे एटा जो भूल करबा कौन कहबा को एटा तो समस्ते एक्सपेक्ट करे मु समस्ते ठीक कहबो कारण एटा समस्ते मु ऑलरेडी स्टार्टिंग रे को डिस्कस करिछि केमिति मु कहबी आउ थरे कहबा एटा हला इंडिया तो जेतरे साउथ वेस्ट मॉनसून से करंट एमती फ्लो करे जेतरे नॉर्थ ईस्ट से ओशन करंट एमती फ्लो करे यूपीएससी या को दी थर पचारिछि मेंस रे ताले एटा कोन रिवर्स होउछि एटा साउथ वेस्ट मॉनसूनल करंट एटा होछि तबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल करंट रिवर्स होउनी wind pattern सहित so that is why what A सुनीता मोनालिसा शिवाशिष समस्त कहते राइट यस करेक्ट सुश्री संगीता नायक हेकला सुमित्रा हेकला सुजाता हेकला सस्मिता मोनालिसा करेक्ट देन आसबो 28 two more questions which of the following factors affect the waves height of the ocean कही थी बहुत थर कही हाइट वेव्स रो हाइट
ट्राई करो 28 इजी क्वेश्चन अच्छी टिके दिमाग लगे हो टिके दिमाग लगे हो शत्रु कौच ऑल सस्मिता कौच बी शुभकांत बी प्रथम कथा देख ओशन रो जिते बळे आमे सालिनिटी सहित सालिनिटी सहित किछि नवा दवा नाही एथिपई दिस वुड बी रॉन्ग कहीं की salinity तार वेव कहीं की कंट्रोल हबो salinity is responsible for the ocean current development not the waves पई किए दरकार wind waves कोन ए जो तुम्हारा waves wind जेते बळे आसे ना पवन अधिक हेले waves अधिक होय कहीं की because of what friction गोटे बेलारे पानी अछि आमे जेते एमती फुंकू जे से कोन छोट 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 waves होछि ताले wind दरकार ताले जोठी wind रहले सेटा हबो that means 1 and 2 80 अछि 1 and 2 80 से कुछ डिस्टेंस होबो तो which the wind blow बिल्कुल सत कथा डिस्टेंस यदि अधिक हबो ताले वेव्स अधिक हबो कम हेले कम हबो ताले दिस इज इंपोर्टेंट राइट द लास्ट टू क्वेश्चंस which of the following exclusive economic zone ये तो बहुत इजी क्वेश्चन अनक्लोज एटा कोथे यूनाइटेड नेशन सी लॉज ये कौन से यूनाइटेड नेशन सी लॉज अंडर अनक्लोज यूनाइटेड नेशन सी लॉज ए शत्रु शुभकांत सस्मिता ए दौची देखिया हाँ ठीक अच्छे बेस लाइन रु ही एटा बेस लाइन रु नबो एटा पुनी कहि देबन कि कॉन्टिग्युअस जोन रु टेरिटोरियल रु केमती नबनी केमती हेइथाय फटाफट मु ड्रॉ करके देखै दउची एटा समस्त जानि थबो आई होप केमती हेइथाय देखो भाबो एटा होची इंडियन कोस्ट एमती जिगजैग थाए ए जो लाइन टा हला बेस लाइन कना एटा तमरा चिलिका रिका भीतर नाही कि एटा हला तमरा इंटरनल वाटर ए जो वाटर टा एटा हला इंटरनल आ ए जो लाइन टा मु खिंचली दिस इज द बेस लाइन 12 200 एटा हला 12 नॉटिकल एटा होची हमरो कोन टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिग्युअस जोन ए टू 0 टू नै कि 200 एटा हला तमरो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट लास्ट क्वेश्चंस deep sea hydrothermal vents last questions in the context of deep sea hydrothermal vent which of the following is are correct हाँ कुह last questions एडा हेई परिबो समस्त करि परिबो ट्राई कले समस्त करि परिबो मु कहली ट्राई कर समस्त करि परिबो मु कहली बा समस्त करि परिबो ट्राई कले हबो मिड ओशियनिक रिज टा इंडियन ओशन रे भी देखा जाए अटलांटिक रे भी देखा जो पैसिफिक रे देखा जो हाइड्रोथर्मल भेंट अर्थात जोटी वोल्केनिक एरप्शन हुए ये सब कौन ये सब जोटा तुमरो वोल्केनिक एरप्शन सी फ्लोर रे जोटी जोटी वोल्केनिक एरप्शन हेची बा एक्टिव अछि कंटिन्यूअसली न ही थई पारे दैट इज ताले कोन ओशन फ्लोर रे नाही कि मिड ओशियनिक रिज हेले हाइड्रोथर्मल भेंट हबनी दिस इज करेक्ट
This is correct. Ocean salinity major source no. This is one of the source but not major. Major source kiye? River. Major source kiye? River. That is why this is wrong. 3 got wrong. River is the major source. So it would be B is the correct answer. हाँ आपको ब्लैक बहुत बढ़िया जमती सस्मिता कही आपको ब्लैक स्मोकर भी कहा जाए आपको कौन कहा जाए ब्लैक स्मोकर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक स्मोकर एंड व्हाइट स्मोकर बहुत बढ़िया तो आज सेशन बहुत बढ़िया रहा ये तुम अच्छी है ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दियो आई विल शेयर देयर कोठी जॉइन करिवो ओएस मेंटर अगेन मु कहूची पीडीएफ तुमको StudyIQ चैनल रे मिली जिवो दीटा जगह तुमको पीडीएफ मिलिवो कोठी मिलिवो ओएस मेंटर एंड StudyIQ टेलीग्राम चैनल ए दीटा टेलीग्राम चैनल रे तुमको पीडीएफ मिल जिवो राइट so thank you everyone for your continuous time दबारे I am also putting the effort right and ये बिल्कुल तुमको एग्जाम रे हेल्प करिवो एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एतिकी डेवलप होबो ना शायद एतिकी तो बाकी पिला माने करि परिबे ही नहीं ओके थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल थैंक यू to all okay good night